Namaskar, good morning and welcome. I welcome Honorable Union Minister for Ayush, Shri Sarbananda Sonowal sir. I also welcome Secretary Ministry of Ayush, Vaidya Shri Rajesh Kotecha sir. I welcome Dr. Manoj Nesri, Advisor Ministry of Ayush. We are gathered here to announce and celebrate the upcoming Day for Ayurveda, which is celebrated on the 11th of November. ये धन्वंतरी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आयुष मिनिस्ट्री ने काफ़ी कदम उठाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम लिए हैं जिससे आयुष की वेरियस ट्रेडिशनल मेडिसिन और प्रैक्टिसेस आजकल बहुत प्रचार में हैं। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO का भी भारत में बन रहा है। G20 गांधीनगर की बड़ी जो कार्यक्रम हुआ था उसके साइडलाइंस पे एक बहुत अहम कॉन्क्लेव हुआ था आयुष मिनिस्ट्री और WHO की तरफ से। आज हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू प्लीज गिव हिज ओपनिंग रिमार्क्स। दिस विल बी फॉलोड बाय अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर मनोज नेसरी। इसके बाद माननीय मंत्री आयुष अपने कुछ रिमार्क्स करेंगे। उसके बाद हम मीडिया से क्वेश्चंस लेंगे। सेक्रेटरी आयुष, I request you for your opening remarks, please. Thank you, Manisha ji. Honorable Minister Sri Sarbananda Sonowal ji, Ministry of Ayush and Ministry of Ports and Shipping and Waterways. My colleague, Manoj Nesri ji, Advisor to Government of India in Ministry of Ayush, and my colleagues and all friends from the media. Today we are assembled here for a curtain raiser program exactly 30 days before. Today is 10th of October and on 10th of November there is an 8th Ayurveda day. So 30-day countdown is from today. So we are having multiple celebrations and multiple programs for the sensitization of the people at large across the country and across the globe. And for that purpose we all know that in last 9 years from 2014 there is a tremendous growth of Ayush sector and Ayurveda in particular. Very huge development has happened in all the areas. So in terms of research, we all are aware that in COVID-19 the Ayush 64, a medicine from Ayurveda, was approved by the National Task Force on COVID Management as a adjuvant and as a main treatment of COVID-19. And there are a lot of publications for not only COVID, but in last 9 years there are multiple publications, and then all these publications we have put on Ayush Research Portal, where you can get more than 40,000 publications of all Ayush sciences. So this is one kind of in the area of research. In the area of education, we all know that there is a huge development in the education sector. Our chairman of our president of National Commission of Indian Medicine Board of Ethics and Registration is here, Professor Rakesh Sharma ji, and the team of NCISM has and NCH homeopathy, they brought in a lot of tremendous quality changes in the area of education. Similarly, in the area of public health, we all know that from primary to secondary to tertiary, everywhere through the National Ayush Mission and in convergence with National Health Mission across the country, there is a huge work has happened. Just for example, in the area of primary health, we have been allocated 12,500 health and wellness centers, and these 8 WC of Ayush based, 8,000 were operational in last year. So in just 1 year, just last year from 1st January to 31st December, we have seen 8.42 crore patients across the country. So this is at primary. We have at secondary level, we have across the country, Ayush has presence in all district hospitals, and there are 50 bedded hospitals of Ayush being supported by National Ayush Mission, more than 137 across the country. So in public health, in industry perspective, we all know that the industry manufacturing sector has grown by 8 times in 9 years, from 3 billion to 24 billion from 2014 to 2023. So actually all this has happened because of the attention of our Honorable Prime Minister, because he has mentioned
about Ayush, and he is suggesting the people of our country to adopt Ayush systems in various platforms. So when 100th episode of Man Ki Baat was happening, so at that time we did a small study about Man Ki Baat, and then we had also issued an entire dedicated issue of our Research Council's journal, where impact of Man Ki Baat was studied by and then contributed by different authors of great authors of our country, and we found that more than 34% of time Honorable Prime Minister has mentioned Ayush in his Man Ki Baat. So at least in every 3 Man Ki Baat he has mentioned about Ayush. So in public health, in manufacturing, in industry, in education, in research, everywhere there is a tremendous growth of Ayush. And to celebrate this and to sensitize and to disseminate these informations, we are celebrating this Ayurveda Day and days of other systems, Siddha Day, Naturopathy Day, Yoga Day. It started with Yoga Day, and we found that Yoga Day has contributed, the sensitization and growth of yoga across the globe. So Ayurveda is also, like our Honorable Prime Minister has mentioned when he was inaugurating All India Institute of Ayurveda in 2017, he has mentioned in his speech that अभी योग दुनिया भर में पहुंच गया, अब आयुर्वेद का नंबर है, आयुर्वेद आएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें 20 वर्ष 25 वर्ष राह देखने की जरूरत नहीं, अगले 5 वर्ष में आयुर्वेद हम दुनिया भर में पहुंचते हुए देखेंगे. ये उन्होंने 2017 में कहा था और अभी हम 2023 में बैठ रहे हैं, और उन्होंने जो कहा वैसा हुआ. दुनिया भर में आयुर्वेद का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत सारे देशों में उसके प्रोडक्ट्स वगैरह जा रहे हैं, और बहुत सारे देशों में नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं. इसी बैकग्राउंड में, इन दिस बैकग्राउंड, दिस countdown of Ayurveda Day is happening, and our advisor Sri Manoj Nesri ji will actually detail what is the plan, and the main event will be held. Our Honorable Minister also will mention about all the program. The theme is Ayurveda for One Health, and also with a tagline of Ayurveda for everyone on every day. हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद. हमने पहले हर दिन हर घर आयुर्वेद थीम पर पूरे देश में इसको काफ़ी काम किया था. अभी उसको ज़रा और आगे बढ़ा कर हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, ऐसी टैगलाइन के साथ आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ एक थीम के साथ हम इसको आगे बढ़ रहे हैं. 10 नवंबर को जो धन्वंतरी जयंती है, प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन इसका आयोजन होता है, तो 10 नवंबर को धन्वंतरी जयंती के दिन प्रमुख कार्यक्रम पंचकुला में करेंगे, और पूरे देश में सभी विश्वविद्यालय, हमारे सभी जो आयुष के कॉलेजेस हैं, हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं आयुष के, और देश भर में जहाँ जहाँ भी आयुष का प्रेजेंस है वहाँ सब जगह आयुर्वेद डे का सेलिब्रेशन होगा. मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो एक्टिविटी है, एक्चुअली ये इट इज़ नॉट जस्ट सेलिब्रेशन बट इज़ ए डिसेमिनेशन ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू द पीपल एट लार्ज, सो दैट SDG 2 और SDG 3 को अचीव करने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ाएं. आप मुझे हम लोगों को पूछेंगे कि SDG 3 तो समझ में आता है, SDG 2 कैसे, लेकिन आयुर्वेद जब वन हेल्थ की बात करते हैं तो आयुर्वेद में पशु आयुर्वेद भी है, वृक्ष आयुर्वेद भी है, मतलब वृक्षों के लिए, प्रकृति के लिए और प्राणियों के लिए भी आयुर्वेद है. तो इस वर्ष हम वन हेल्थ में इन सब चीज़ों को भी ले रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे मीडिया बंधु इस विषय को आगे बढ़ाने में हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और आप मदद करेंगे. धन्यवाद. Dr. Manoj Nesri will make the presentation now. माननीय मंत्री महोदय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, मंत्री आयुष मंत्रालय और मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, माननीय सेक्रेटरी आयुष पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, माननीय DG, आप सभी को मेरा नमस्कार, और पत्रकार बंधुओं. ये जो प्रोग्राम है 8वें आयुर्वेद दिवस का ये कर्टन रेजर है,
और ये 8वां आयुर्वेद दिवस है। ये 10 नवंबर 2023 को ये सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन ये पूरे एक महीने में कई सारी गतिविधियाँ, कई सारी एक्टिविटीज़ ये की जाएगी, जो जैसे भी सेक्रेटरी साहब ने बोला कि ये 3 सेक्टर जो है उनको फोकस करके की जाएगी। इस पहली स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पे राइट कॉर्नर में जो है वो आयुर्वेद डे का लोगो है। 2016 से इसी को हम प्रयोग करते हैं और ये आयुर्वेद डे का लोगो है। और इसमें आप देखते हैं कि जो 5 जो पेटल्स है वो एक्चुअली पंच महाभूत निर्देशित करते हैं, जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश है, मतलब पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो वहाँ पे निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो 2016 से अब वो आयुष मंत्रालय ने इसको एक विधिवत इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे ये मंत्रालय का निर्माण हुआ था। और इसके बाद में जो आयुष पद्धतियाँ है, योग है, आयुर्वेद है, इनका एक बहुत ज़्यादा प्रमोशन इसका हुआ है, इसका प्रचलन हुआ है। और केवल प्रमोशन ये बात नहीं है, इससे जो टोटल इकोनॉमी जो है वो पूरे देश की और इस क्षेत्र की, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है। और ग्लोबल लेवल पे अब इंडिया को, भारत को और अब आयुर्वेद और योग को एक बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला है। तो इस परिप्रेक्ष्य में 2016 से ये धन्वंतरी जयंती, मतलब धनतेरस का दिन, इसको वो मनाया जाता है। इसका वो एक फॉर्मल नोटिफिकेशन ये गैजेट ऑफ इंडिया में हुआ, ये हुआ था 1 जून 2017 को, और ये नोटिफाई होकर ये फॉर्मल वे में आ गया। और इसके बाद में हर साल अलग अलग थीम लेके ये आयुर्वेद डे वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो है वो 10 नवंबर को किया जाएगा। So there are various objectives for the Ayurveda Day. First is the promotion and the position of Ayurveda to the global forefront in the healthcare. तो ये पहला है कि मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तो जिसको WHO ने भी प्रमोट किया है, तो उसमें आयुर्वेद एक बहुत बड़ा योगदान देता है। Explore the potential of Ayurveda to contribute towards the national health policy and shaping the national हेल्थ प्रोग्राम्स। जैसे आप जानते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, तो इसने भी एक्चुअली इसको प्रमोट किया है, आयुर्वेद को, योग को और जितने भी इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उसको। और इसका योगदान जो है वो हमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से देना है, और जो हमारा जो पॉपुलेशन का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। टू रिड्यूस द डिसीज बर्डन एंड एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी and mortality by harnessing the untapped potential of Ayurveda, focus on the unique strength of Ayurveda and its holistic principles in preserving the health and well-being of the humans as well as plants, animals and environment, enhance the trust and credibility in Ayurveda and promote awareness of Ayurveda through community engagement among the general public, students, farmers, etc. Nurture the culture of illness to wellness through Ayurveda and for the holistic benefits, and to emphasis on evidence-based scientific aspect of Ayurveda. Next slide. So from 2016 to 2022, various themes the Ministry of Ayush has selected. It is like the diabetes mellitus, or in 2017 it was pain management through Ayurveda. In 2018 it was Ayurveda in public health, and so on and so forth. And every year this particular theme the ministry was chosen, and ministry worked on this particular theme, and that helped in generating awareness about public and getting the strengths of Ayurveda in the management and control of those various issues. With this background, the Ayurveda Day theme for the 2023 is Ayurveda for One Health, and this is in line with the theme that was chosen by the India for the G20 theme, that is the Vasudhaiva Kutumbakam, which says that the whole universe is one family. So similarly, this Ayurveda for One Health, because One Health is the concept where actually it is focusing on the health of the human being, health of the animals, health of the plants, as well as the health of the entire environment, because we are the part of the environment. और जितने भी अलग अलग घटना है जो एनवायरनमेंट में होती है, उसका सीधा असर जो है वो हमारे हेल्थ के ऊपर होता है। और इन सारी चीज़ों को आयुर्वेद ने उसके बारे में बताया है, उसके बारे में उसका दिशा निर्देश दिए हैं। So in this particular activity will be focusing main 3 sectors. The first is छात्रों के लिए आयुर्वेद, that is for the students. और ये जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसी के आधार पे एक्चुअली ये अलग अलग गतिविधियाँ की जाएगी।
किसानों के लिए आयुर्वेद तो मतलब जो फार्मिंग सेक्टर है तो उसको फोकस करके ये एक दूसरा सेक्टर है, और जन स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद मतलब स्वास्थ्य ये एक मेन उद्देश्य जो है उसके लिए है। नेक्स्ट वन। So in line with the National Education Policy 2020, the Ministry of Ayush intend to generate awareness among the school-going children as well as professionals about the strength of Ayurveda in promoting the health as well as opportunities in business in various aspects of Ayurveda. The schools will be encouraged to undertake various programs like project on medicinal plant garden, drawing competition on Ayurveda, and so on and so forth. The competition on innovation in Ayurveda, short films on Ayurveda, etc. will be organized for the professionals. Next. For the किसानों के लिए आयुर्वेद इसमें information on cultivation techniques of 110 medicinal plant developed by the National Medicinal Plant Board will be disseminated to the farmers. Awareness about the medicinal plant cultivation as an additional resource to the farmers, knowledge about the Ayurveda method for the herbal pest control and the other various activities. The various about the utilization of Ayurveda knowledge in farming will be promoted. Regarding the Jana Swasthya ke liye Ayurveda, the public participation in promoting their health is the most important aspect. It is intended to promote the organize various programs to encourage people following various activities for promoting health, including diet, exercise, balanced lifestyle, Ayurveda, first aid, etc. Followed are the various list of activities for the public health. It is the exhibition, mini expo, display of activities, achievements, medicinal plants, books, brochures, digital displays, short films, awareness lectures about the general public, patient, Anganwadi workers, army personnel, BSF, old age homes, Nari Niketan, the radio talk, radio shows, short films on Ayurveda, the medical camps, Prakriti assessment camps, Swasthya assessment camps. The physical activities that is run for Ayurveda, or the dissemination of the various IEC or the e-kit for the purpose of the Ayurveda for One Health, the video competition, sharing of healthy traditional food recipes of Ayurveda. So likewise there will be various activities for the students, and these include the school and the institute may prepare the herbal garden, various competition like drawing Ayurveda recipes, jingles, slogan, posters, development of games based on Ayurveda for the children, so on and so forth. So these will be promoted for the school-going children, and likewise for the farmers, the awareness will be generated, the distribution of the brochures and pamphlets, awareness about the veterinary science, so that will be also focused because the Ministry of Ayush is also in collaboration with the Department of Animal Husbandry, and the lot of Ayurvedic products they are already being utilized for the veterinary, so Ministry will also focus on this, and the dissemination on the various applicable concepts of Vriksha Ayurveda, that is the science of the health of the plants, so that will be promoted. So likewise the cultivation and the marketing of medicinal plants, buyer sellers meets, the preparation of the medicinal plant list suitable for the cultivation, because we have the different agroclimatic zones, so they with these kind of various activities they will be conducted through agriculture universities to focus on the farmers. After this presentation, an e-book will be presented by the Honorable Minister. At the same time, a microsite on the www.ayurveda.org.in, so that is also being developed, and that will be launched within a day or two. The various activities the people they will undertake, so they can see the various activities on this microsite, and they can also post their the photos and other activities on this website. Next. And as informed by the Honorable Secretary, the main function, it will be at Panchkula. It will be on the 10th November. So on the 9th November, there will be a conference on this particular subject, followed by the main function on the 10th November at Panchkula. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर नेसरी। मैं केंद्रीय आयुष मंत्री माननीय श्री सोनोवाल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। इससे पहले एक हम ई बुक लॉन्च करेंगे।
माननीय आयुष मंत्री अभी उद्बोधन करेंगे। नमस्कार। हमारे मंत्रालय के सचिव पद्मश्री राजेश कोटेचा जी और एडवाइजर मनोज नसारी जी और एडीजी पीआईबी मनीषा जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधुगण, आप सबको जैसे बताया गया है कि अगली 10 नवंबर को हमारे हरियाणा की पांचकुला में 8th एडिशन ऑफ आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। और आयुर्वेदा डे के लिए जो थीम रखी गई है, ये थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ और आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। आप सबको मालूम है, जैसे इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में जो हमें थीम रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, इन दैट स्पिरिट दिस हैज बीन अडॉप्टेड। और हमारी पृथ्वी में जो भी प्राणी है, सभी प्राणियों को सुरक्षित रखना ये हम सबकी कर्तव्य बनती है और हमें इन पर निष्ठापूर्वक अपनी भूमिका पर्यावरण को सही सुरक्षित रखने के लिए पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए दुनिया में आज सब लोगों ने तय किए है कि क्लाइमेट चेंज को रुकने के लिए हमें क्लाइमेट एक्शन लेना ही होगा, ताकि पृथ्वी में जो भी प्राणी है, ये प्राणी सब सुरक्षित रहे। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर हो, प्लांट हो, सबकी जीवन सुरक्षित रहे, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, इन पर हमें कदम उठाना होगा। इसलिए आयुर्वेद, आप सबको मालूम है, इट्स ए काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ। आयु का मतलब है जीवन, वेद का मतलब है ज्ञान। तो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान पद्धति के जरिए अब तक जो भी कदम उठाया गया है, दुनिया में मानव समाज को, पशु पक्षियों को भी इसमें काफ़ी राहत मिली है। अलग अलग प्रक्रिया जो ट्रीटमेंट के लिए सदियों से यहाँ चले आए हैं, इनको साइंटिफिक एविडेंस के जरिए कैसे हम और आगे बढ़ाए, इन पर हमें आयुर्वेदा डे के जरिए ही प्रतिबद्ध होना होगा। इस बार ये भी रखा गया है कि आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स, आयुर्वेदा फॉर स्टूडेंट, आयुर्वेदा फॉर द पीपल। तो इसलिए हम सभी व्यक्तियों को इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमें निश्चित रूप से अलग अलग कार्यक्रम लेना होगा। पिछली 7 एडिशन तक जो भी कार्यक्रम देश और दुनिया में ली गई है, वो सफलपूर्वक हमने उसको आगे बढ़ाया। हमारे देश की आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष कोशिश की वजह से उन्होंने जिस हिसाब से आयुष को बढ़ावा दी है, मान्यता दी है, सहयोग की है, उनकी निरंतर सहयोग के वजह से आज
आयुष ने अपना शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है, दुनिया की मानव समाज की विश्वास भी जीतने में सफलता प्राप्त की है। आयुष प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी, आयुष प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी, आयुष प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी एंड ऑल्सो सर्विसेज, whether it is manufacture or service, in every sector, Ayush now been accepted as a most credible kind of treatment for the prevention of disease and promotion of health, and for the holistic healthcare of mankind. This has become a now very, very important kind of way through which people can have lot of relief from different kind of tension of mind, body, etc., etc. And I believe पिछली साल परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में 50 से अधिक देश ने आयुर्वेदा डे मनाया, और इस साल भी हमारा लक्ष्य है 100 से अधिक देशों को जोड़ना. More than 100 numbers of countries are expected to participate in this Ayurveda Day. So I believe this is a very, very important journey so far under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. International Day of Yoga, the growth, the momentum, you have all seen it. And people of the world, the way they have wholeheartedly participated, and because of their wholehearted participation, now International Day of Yoga on 21st of June become the most popular event under UNO. I believe this is a very, very important milestone, an outstanding success story written by India under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So I believe in that spirit we will have to proceed, and in the same spirit Ayurveda Day is also proceeding, and the strength and ability Ayurveda has, the treatment and its service, I believe this is to be understood by the, not only people of the country but also across the world. So that is why our journey will be continued with our commitment and dedication. And I believe in the near future, all my media friends, definitely you have a big role to play because of your support. In the last 9.5 years, the Ayush movement become very successful. And in India, more than 140 crore population, we become the largest populous country in the world. So that's why in every village and every household, let Ayurveda become a way of life. So to make the awareness among the young generation about its efficacy, about its credibility, about its utility, and why we being the responsible citizen have a big role to play for the preservation and promotions of our entire ecology and environment, for the comfortable living of life of all kind, whether it is plant life, animal life, or human life. And also the environment, and also the other non-living like river and kind of soil, weather, etc., etc. And I believe in this aspect, we'll all be responsible enough to put our effort with commitment, dedication, devotion. Dhanyavad. Thank you. Thank you, sir. The floor is now open for questions from the media. Please raise your placards and we will call out. 170. Minister sir, I have two questions for you. We have seen the crucial role played by Ayurvedic system of medicine during COVID-19 pandemic. So I'd like to know, do you think that mix of traditional and modern medicine could be a boost for India's healthcare sector? And number two, what role, according to you, Assam and Northeast is playing in promoting Ayush system of medicine? ये आपने सही सवाल की है. आप हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश के मुताबिक दोनों मंत्रालय
Health and Family Welfare and Ministry of Ayush. We are working together for the promotion of integrative system of medicine in the country, right from AIMS level to the lowest level of health and wellness center in the root. We will have to make both the system available for the choice of the patients. As per the patient's choice, we will provide our best quality treatment and support. And on the other hand, as you have mentioned, Northeast, we are particularly, as you know, the speedy growth, for the speedy growth of Northeast in the last 9.5 years, Honorable Prime Minister have taken a lot of exemplary initiative, and he has extended wholehearted support in all the sector. It is sector of agriculture, sector of science and technology, sector of institutional growth, medical science, sector of traditional, promotion of traditional medicine, and also for the sector of communication and connectivity, and all the sector particularly to promote our export and import, and also developing the inland waterways and giving very important opportunity for the people of Northeast to connect with ASEAN countries, Southeast Asian countries. So this is the way Honorable Prime Minister has given his wholehearted support for the speedy growth of the Northeast, and under his direction, Ministry of Ayush has also extended full support to all the 8 states of Northeast, and we have so far sanctioned 1,000 numbers of health and wellness center for the entire northeastern region, and also we have given a lot of hospital, 50-bedded, 30-bedded, 10-bedded. So, and also we have extended our support to those respected state government to build up the infrastructure, facility, equipments, and all others like essential kind of supply chain of the medicine, so that the Ayush system can grow faster. Thank you. Number 176. 176. मंत्री जी, मेरा नाम केपी मलिक है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ, और मैं बधाई देता हूँ आपको कि आयुर्वेद के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कितना दिखता है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता सरकार को है। मुझे खुद लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, और मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। दिल्ली में ILBS के नाम से वसंत कुंज में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो लीवर के नाम पे काम करता है, लेकिन वो एलोपैथिक है। बिल्डिंग बहुत शानदार है, 5 स्टार होटल की तरह है, लेकिन उनके पास मशीनें हैं, सब कुछ हैं, डॉक्टर हैं, इलाज नहीं है। जिसके पास इलाज है आयुर्वेदा में, उसके पास बिल्डिंग नहीं है, उसके पास डॉक्टर नहीं है, उसके पास समाधान नहीं है। तो इसको जोड़ने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है क्या? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो किसान और आप आयुर्वेदा कंपनी की बात करते हैं, क्या इनके बीच में हम कोई ऐसा सेटअप सरकार कर सकती है कि कंपनियां किसान को प्रोत्साहित करें जन औषधि उगाने के लिए? क्योंकि किसान तो पेस्टिसाइड डाल के पैसा कमाने के लिए गेहूं चावल में लगा हुआ है, उसको तीसरा कुछ पता ही नहीं है। जी, धन्यवाद। ऑन बिहाफ ऑफ आवर मिनिस्टर, आपने जो प्रश्न किया, एक्चुअली मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि न केवल दिल्ली में, देश भर में ऐसे टर्सरी केयर के हॉस्पिटल 750 के आसपास हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और गवर्नमेंट के भी हैं। दिल्ली का उदाहरण, तो दिल्ली में अपना ओल्ड एज ग्रुप आयुर्वेद है, वो काफ़ी बड़ा है, और ILBS का आपने नाम लिया, ILBS के साथ मिलकर के ओल्ड एज ग्रुप आयुर्वेद, ILBS और हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा मिलकर के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम लीवर की बीमारियों में आयुर्वेद का इलाज को हम इनकॉर्पोरेट करें, मेन स्ट्रीम में करें। उस पर काम चल रहा है। तो कि चूँकि रिसर्च का काम चल रहा है तो इट टेक्स टाइम, लेकिन वो ऑलरेडी चल रहा है। फिर आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा है, तो पंचकर्म के चिकित्सा कैसे काम करती है, विरेचन चिकित्सा कैसे काम करती है, उस पर भी उसके बस्ती चिकित्सा कैसे काम करती है, उसको मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट के स्टडी भी ILBS के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो वास्तव में टर्सरी केयर की ऐसी सुविधा देश भर में है, और सबसे अच्छी बात क्या कि आयुर्वेद की जो केयर है उसका खर्चा कुछ नहीं है, मतलब वो कोई बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए बड़े बड़े जो आपने जो मेंशन किया लीवर वगैरह के रोग, तो इसकी चिकित्सा की सुविधा सब जगह है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने जो किसान का कहा, तो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय के पास नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है,
2000 में उसकी स्थापना हुई थी। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने इतने वर्षों में 2.5 लाख हेक्टर ज़मीन पर मेडिसिन कल्टीवेशन का सपोर्ट किया है और उनका काम ही है किसानों को कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी मेडिसिन प्लांट की उसके बारे में जानकारी देना, उनको प्रेरित करना, उनको सपोर्ट भी करना और उनको मार्केट एक्सेस का प्रयास करना। तो मैं उदाहरण देता हूँ कि एक ई चरक पोर्टल है, ई चरक क्लाउड बेस्ड पोर्टल है, एप्लीकेशन भी गूगल पर उसकी है। तो ई चरक में बायर सेलर अपने आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं और पिछले वर्षों में इसका 400% ग्रोथ हुई है इस चरक प्लेटफॉर्म की। किसान सीधे ही बेच सकते हैं बिना मिडिल मैन के, ये भी सुविधा भारत सरकार ने करी है। थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जैसे अभी माननीय सचिव महोदय ने बताया, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है तो लगभग 22 इस प्रकार से सेंटर्स पूरे देश में है। तो इनके साथ में भी इंटीग्रेशन हुआ है, जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो ये 22 जो एम्स है तो इसके अंतर्गत इसमें भी आयुर्वेद का इंटीग्रेशन किया हुआ है। और इसके अलावा जो सफदरजंग हॉस्पिटल यहाँ दिल्ली में, तो वहाँ पे आयुर्वेद का यूनिट खुला हुआ है। एट द सेम टाइम जो डिफेंस के जो अलग अलग 49 हॉस्पिटल्स है तो उसमें आयुर्वेद का इंटीग्रेशन किया गया है। तो अलग अलग मंत्रालयों के अधीन जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 350 हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज जो है जो ESIC की है, तो उसमें वहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है। तो ये जहाँ जहाँ एलोपैथी का ऑलरेडी वहाँ पे हॉस्पिटल्स है तो वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने में ये इंटीग्रेशन अभी हो रहा है। नंबर 11। हेलो, मेरा सवाल राजेश जी से है। क्या आयुष मंत्रालय की कोई ऐसी योजना है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जिनको कुपोषित हैं या पोषण जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिड डे मील, तो उनके साथ क्या आयुर्वेदा की कोई किट या ऐसे जो दवाई या पोषक तत्व जिनको मिल सकें बच्चों को, क्योंकि गाँव से बच्चे आते हैं, तो क्या ऐसी योजना है कि मिड डे मील के साथ आयुर्वेद की कोई चीज़ें उनको दिए जा सके ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, कुपोषण के जो शिकार हैं, पोषक तत्व विटामिन्स मिल सकें उनको? असल में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो एक हमारा नेशनल आयुष मिशन है, नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है, तो स्टेट के साथ मिलकर करते हैं। तो उनके स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य का परीक्षण, उनकी प्रकृति परीक्षा, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरा परीक्षण करके उसको हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर के माध्यम से उनको सपोर्ट करना, ये एक स्कीम है। WCD के साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं सभी आंगनवाड़ी में कि जहाँ जहाँ ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो आयुष इंटरवेंशन जो है उसको हम कैसे कर सकते हैं, उस पर काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। एक तीसरा WCD के साथ मिलकर के एक हमने अभी जो मिशन उत्कर्ष हैं उनके जो अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मिशन उत्कर्ष हैं, उसमें लगभग 5 लाख ऐसे जो माताएं हैं, बच्चे हैं या एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़, उनके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम को बहुत बड़े स्तर पर कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं आयुर्वेद इंटरवेंशन पर, उसका एक काफ़ी बड़ा स्टडी दोनों मिनिस्ट्री ज्वाइंटली इसको करने जा रहे हैं, इसको शुरू किया है। बिंदु को कुछ पूछना। मेरा सवाल है, एक आयुर्वेद की तथाकथित जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उस पे उसके कई प्रोडक्ट पे FSSAI ने बैन किया और उस सवाल खड़ा किया, मंत्रालय इस पे क्या कर रहा है? दूसरा, जो आयुर्वेद एम्स है उसमें जो आयुर्वेद का है उसमें एक वैद्य कहिए या डॉक्टर की भारी कमी है, इसके लिए क्या स्टेप उठाया गया है? असल में क्या है, आपके प्रश्न जो है ना वो थोड़ा सा बायस्ड है, मैं आई एम सॉरी, लेकिन कोई चिकित्सालय की कोई कमी, सुन लीजिए, चिकित्सक की कोई कमी नहीं है। एम्स में पेशेंट का बहुत बड़ा भारी रश है। जब ये बनाया था तब 1000 से 1500 पेशेंट के OPD के हिसाब से बनाया था, अभी 2500 पेशेंट आते हैं, उसके अनुसार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो रहा है और वो हो जाएगा कुछ दिनों में। और ये जो आपने FSSAI का कहा, ये रेगुलेटरी अफेयर्स है। हमारे क्षेत्र में 2.5 लाख से ज़्यादा यूनिट्स हैं, 9,500 तो इंडस्ट्री है। तो जैसे बाकी सेक्टर में भी इंडस्ट्री बड़ी होती है, वहाँ कुछ इश्यूज आते हैं, तो रेगुलेटरी अफेयर्स इज ए डायनेमिक थिंग, ये चलता रहता है और जो भी गड़बड़ करेगा उसको कोई छोड़ता नहीं है। हम लोग इनको बराबर नज़र है हमारी, और हम स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और उनको लगातार अवेयर कर रहे हैं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायनेमिक है ये चीज़। इसलिए 2-4 यदि इंडस्ट्री ने कोई गड़बड़ करी तो इसके कारण सब लोग गड़बड़ करें, ऐसा इसका इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए। सर, मुझे आई वांटेड टू फाइंड आउट अबाउट आयुष फॉर फार्मर्स वाला,
इसमें do we have a tie-up with any state government? What is the target production that we are aiming at, and which are the crops that we are looking at? मैं बताता एक्चुअली नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का पूरे स्टेट के साथ मिलकर के एक इकोसिस्टम है. तो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से इट इज़ क्रिएटेड बाय स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स फॉर दैट. आज ही जैसे NMPB का सभी स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के साथ एक मीटिंग डॉक्टर आम्बेडकर भवन में चल रहा है. वहाँ 30 स्टेट के लोग आए हैं. तो ये स्टेट के साथ मिलकर के फील्ड एग्जीक्यूशन का काम स्टेट के पास रह करके इनको हम सपोर्ट करते हैं. और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर के क्वालिटी प्लांट मटेरियल की फार्म का नर्सरी से लेकर के उनको हम पूरा ये हमारी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की अलग अलग स्कीम्स हैं. लेकिन कुल मिलाकर के मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 150 से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट की टेक्नोलॉजी NMPB ने डेवलप करी है. मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करना, उसको कल्टीवेट करके कैसे मैक्सिमम आउटकम लेना विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स, और नेचुरल मैन्योर के द्वारा कैसे इसको करना, इसके हार्वेस्टिंग का टेक्नोलॉजी और उसको कैसे हम मार्केट एक्सेस दें, वहाँ तक का काम हम लोग कर रहे हैं. और QCI के साथ मिलकर के एक स्कीम भी लॉन्च करी है जो कल्टीवेशन के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए किसानों को सर्टिफिकेशन भी देती है. हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर के भी हम ये मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन के ऊपर नई नई टेक्नोलॉजी के लिए उनके साथ MOU किया है. उनके साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं. Thank you for coming. We will close the press conference now. Thank you. Thank you. Please join us for high tea and snacks on the 4th floor.